Assalamualaikum everyone. Today we are going to be debunking some very common skincare myths. Let's dive right in. Myth number 1. Pores can open and close, यानी pores को खोला या बंद किया जा सकता है. This is absolutely not true. Pores के अंदर कोई इस तरह के muscles नहीं होते जो उनको खोलते या बंद करते हैं. कभी कभी ठंडे पानी से लगता है कि pores जो हैं वो tight हो गए हैं. उसका reason ये नहीं है कि pores actually बंद हो जाते हैं. उसका रीज़न ये है कि ओवरऑल कोल्ड वाटर आपकी स्किन को कंस्ट्रिक्ट करता है. कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं. दे हैव अ सिमिलर इफेक्ट, जिसमें ग्रीन टी फॉर एग्जांपल इज़ वन, विच हेजल इज़ वन. They also have a similar effect where temporarily it feels like they've closed your pores, but the effect is temporary. They haven't actually closed your pores, and in fact a lot of people actually reach out to us and ask कि हम pores को बंद किस तरीके से कर सकते हैं. So this is also for them. Pores को आप बंद नहीं कर सकते. Pores are a normal, natural part of everyone's skin. They are meant to be there. They have a function and a purpose in your skin. Pore size is also mostly genetically determined, so there isn't a lot that you can do to shrink them. Myth number 2. Toothpaste can cure acne. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये actually मैंने भी growing up बहुत ज़्यादा सुना था, because like you guys know, I had very severe acne myself. Oftentimes my दादी especially used to tell me पिंपल पे टूथपेस्ट लगाओ ख़त्म हो जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं था. It just used to irritate the skin around the pimple. Toothpaste theoretically can have a temporary drying effect, लेकिन it's not designed for the skin, और उसमें ingredients इस तरह के होते हैं जो आपकी skin को irritate कर सकते हैं. So not recommended. If you do have an active pimple जिसको आप बिठाना चाहते हैं और जल्दी बिठाना चाहते हैं, I understand the pain. The best way to go for that is a pimple patch. So that way you minimize the risk of a scar, you minimize the risk of skin irritation. The skin in that area actually will allow it to heal faster also. So if you do have an active pimple, please ditch the toothpaste and go for a pimple patch instead. Myth number 3 is probably the most pervasive, कि natural और organic skincare products chemical या synthetic skincare products से बेहतर होते हैं. अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये केमिकल स्किन केयर प्रोडक्ट क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है. पानी इज़ अ केमिकल, हवा इज़ अ केमिकल, यू आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, एवरीथिंग ऑन दिस प्लैनेट इज़ अ केमिकल. तो ये केमिकल फ्री स्किन केयर कुछ भी नहीं होता. सो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ आवर वोकैबुलरी वंस एंड फॉर ऑल. Natural and organic skincare is also made up of chemicals, and as far as the legal definition of natural or organic in skincare is concerned, इसकी कोई legal definition नहीं होती. So इसका मतलब basically ये है कि कोई भी बंदा कुछ भी बना के उसमें natural और organic का ठप्पा लगा सकता है, and that's that. ज़रूरी नहीं है कि वो natural और organic हो भी. The second thing is कि बहुत सारे skincare में ingredients इस तरह के इस्तेमाल होते हैं जो आपको nature में भी मिलते हैं, but chemists have found an easier and cheaper way of making them in the lab. So where do you really draw the line कि natural क्या है और synthetic क्या है? अगली चीज़ ये है, there are a lot of things that you find in nature are actually not good for the skin. They can be toxic, they can be irritating. Case in point, essential oils not recommended, lemons not recommended for the skin at all. उसके अलावा Botox, botulinum toxin जिसको कहते हैं, is the most poisonous substance found on the earth, and it's completely natural. Natural and organic doesn't necessarily mean कि safer है या आपकी skin के लिए बेहतर है. In fact, if you have sensitive skin, natural and organic skincare products might not be better for you. Reason being, sensitive skin is more prone to react to different ingredients, और natural और organic कोई भी चीज़ जब आप लगाते हैं, a lemon or any other natural ingredient, and you try to break it down into its component parts, उसमें बहुत ज़्यादा compounds होंगे. So that means that your skin has a higher probability of actually reacting to those things, right? So in that case, synthetic is actually better. So the gist of all of this is कि ये नहीं matter करता कि ingredient natural है या synthetic है. अच्छे और बुरे ingredients दोनों sources से हो सकते हैं. And good skincare is skincare that basically leverages the best from both worlds. Myth number 4. If you have oily skin, you should not use moisturizer. ऐसा बिल्कुल नहीं है. In fact, अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप मॉइस्चराइजर नहीं इस्तेमाल कर रहे, there is a chance that your oiliness, मतलब जितना स्किन आपकी ऑयल प्रोड्यूस कर रही है वो बिगड़ जाएगी. Let me explain why. जब आप अपने फेस को क्लेंस करते हो, so even if you're using a gentle cleanser, to some extent आपकी स्किन के अंदर से फैट्स और ऑयल्स जो नेचुरली आपकी स्किन को उनकी ज़रूरत है टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन, वो कुछ थोड़े बहुत क्लेंजर आपका धो के बेसिकली गटर में ले जाता है. सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट इज कि आपकी स्किन के अंदर से
पानी ज़्यादा easily escape करता है, skin थोड़ी dehydrate होती है. So in order to prevent that, because water is so essential for the health of your skin, your oil glands actually start to produce more oil. So if you want to actually control oil production and maintain skin health, moisturizer is essential regardless of your skin type. हाँ, the only thing you need to be mindful of is कि moisturizer में ingredients इस तरह के ना हो जो आपको break out कर दें, या moisturizer आपकी skin के लिए suitable हो, but it doesn't matter आपकी skin dry है या oily है, moisturizer लाजमी होता है लगाना. And ideally you should apply it while your skin is still damp right after cleansing for maximum benefit. Our last and final myth is that expensive skincare products work better. This may or may not be true. This highly depends on ingredients product में कौन से हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ingredients expensive वाकई होते हैं and the skincare product needs to be priced accordingly. But that said, a lot of expensive products actually are expensive just because of the brand name or the marketing or the packaging. So unless and until something does have a proprietary ingredient that is shown to work and the ingredient is pricey, ज़रूरी नहीं है कि expensive product cheaper product से बेहतर work करेगा. So this is just something to bear in mind. I've seen a lot of products, especially eye creams. Most of them are scams. Brands क्या करती हैं? अपना moisturizer देती हैं, उनको छोटी सी पैकेजिंग के अंदर डाल के जो moisturizer 5000 का बेच रहे हैं, उसको 15 ml की पैकेजिंग के अंदर करके 10,000 रुपए का बेचना शुरू कर देते हैं, उसको आई क्रीम का नाम देके. That's a scam. That said, बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ पे भी नहीं जाना चाहिए because वहाँ पे brands have obviously then they try to make compromises on their quality, etc. Because at the end of the day, every company needs to turn a profit in order to be sustainable. So guys, I hope you enjoyed this video. You might enjoy seeing another video that I did on some of the craziest things that people have done on Reddit. Linking it down here. Please go watch that next. And let me know if you have any myths that you would like for me to cover in future. I'll see you in the next video, inshallah.